أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. सलवात मोहम्मद। बदीगर सलवात। जब गिरे घोड़े से मख्तल में शहे करबो बला, जब गिरे घोड़े से मख्तल में शहे करबो बला, खंजरे जुल्म लिए शिमरे सितमगार बढ़ा, दी तड़प कर दरे खैमे से ये ज़ैनब ने सदा, अभी खंजर ना चला, अभी खंजर ना चला, जालिम अभी खंजर ना चला। लूट मत बहरे खुदा फातिमा जहरा का चैन, लूट मत बहरे खुदा फातिमा जहरा का चैन, और कुछ देर ठहर जा अभी जालिम के हुसैन, बख्शिशे उम्मते जद की अभी करते हैं दुआ, अभी खंजर ना चला, अभी खंजर ना चला, जालिम अभी खंजर ना चला। 3 दिन हो गए प्यासा है नबी का जानी, 3 दिन हो गए प्यासा है नबी का जानी, ज़िब्हा करना है तो 2 घूंट पिला दे पानी, कुंद खंजर है मेरे भाई का सूखा है गला, अभी खंजर ना चला, अभी खंजर ना चला, जालिम अभी खंजर ना चला। बोसा गाहे नबवी है ये गला ए जालिम, बोसा गाहे नबवी है ये गला ए जालिम, शहरगे दी पे खंजर ना चलाए जालिम, चूमते थे इसी हलकूम को महबूबे खुदा, अभी खंजर ना चला, अभी खंजर ना चला,
जालिम अभी खंजर ना चला, छोड़कर खुल्द ज़रा फातह खैबर आलें, छोड़कर खुल्द ज़रा फातह खैबर आलें, और कुछ देर ठहर जा के पैगंबर आलें। आती ही होंगी वो आने दे अम्मा को ज़रा, अभी खंजर ना चला, अभी खंजर ना चला, जालिम अभी खंजर ना चला। क्या करूं जाऊं कहाँ, किसको पुकारूं भाई, क्या करूं जाऊं कहाँ, किसको पुकारूं भाई, कैसे देखेगी तुम्हें दौड़ते दम्मा जाई। या इलाही मुझे शब्बीर से पहले ले उठा, अभी खंजर ना चला, अभी खंजर ना चला, जालिम अभी खंजर ना चला। हाय किस दिल से करूं तस्कराए जोरो जफा, हाय किस दिल से करूं तस्कराए जोरो जफा, कट गया सामने ज़ैनब के शहीदी का गला, चीखती रह गई ज़ैनब दरे मकतल बाखुदा, अभी खंजर ना चला, अभी खंजर ना चला, जालिम अभी खंजर ना चला। सलवात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पर असीरी की खाक उड़ाती है। सलाम उस पर जो ज़हमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए
बच्चे न बच सका भाई, असीर हो के जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, बुझे जो प्यास तो अशकों के जाम हाजिर है। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शामें गरीबा के घुप अंधेरे में। ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी, वो सीना जिस पके सोती थी अब कहाँ बीबी। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पर बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। जनाब मादरे बेशीर को भी सबका सलाम, अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का पयाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे। नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज। सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों, सलाम तुम पर
रसूलो बतूल के प्यारो, बचे तो अगले बरस हम है और ये गम फिर है। बचे तो अगले बरस हम है और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अल-फातिहा। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आशूर का सूरज है कयामत की घड़ी है, भाई का गला कटता बहन देख रही है। मकतल में किसी माँ की सदा गूंज रही है। ए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आ जा। मेरे लिए ऐ लाल तू असगर की तरह है, गोदी मेरी गहवा रह बिस्तर की तरह है। इस धूप में दामन मेरा चादर की तरह है। ए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जाओ मेरे बच्चे। मैं माँ हूँ मेरा दिल नहीं सीने में संभलता, नाजुक ये बदन तेरा ये जलता हुआ सहरा, और इस पे सितम ये है कि तू रह गया प्यासा। ए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, मैं गोद में ले लूं तुझे सीने से लगा लूं। सीने पे सकीना की तरह तुझको सुला लूं, सीने से तेरे तीर मैं पलकों से निकालूं। ए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, आकर मेरे रानों पे जो सो जाते थे बेटा, चक्की की मुशक्कत से भी पहलू नहीं बदला।
अब कैसे तुझे छोड़ दूं मक्तल में अकेला। आ ए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, तेरी भी तो औलाद है, तू भी तो पिदर है। औलाद का गम क्या है ये तुझको भी खबर है। गम बच्चे का सह जाए ये किस माँ का जिगर है। आ ए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, क्यों लेट गया थक के तू इस जलती जमी पर। ये किस का लहू तू ने मला रूए हसी पर। मत खाक पे सो लाल तेरी माँ है यहीं पर। आ ए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, आ जा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आ जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Azamallahu ujurana bi ujurikum bi basabina bil Husaini alayhi salam. May Allah magnify our reward for commemorating the Azza of Sayyid al-Shuhada Imam Hussain alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. We are gathered here on this day of Arba'een to pay our tribute to Sayyid al-Shuhada, our heartfelt condolence to the household of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, and the Imam of our time, Ajullah Ta'ala Fajr Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On the sad occasion, uh, we are not able to go to the Zari of Imam Hussain among those millions of people around the world. And may Abu Abdullah Hussain accept our salam from this distance, inshallah, on this date of Arba'een. The majlis will inshallah continue after the announcement. We have Sheikh Sayyid Ali Kulani inshallah reciting the majlis of Arba'een with us on this day of Arba'een. If you all remember, in after the Muharram, after the Ramadan, we started promoting an event called Hussain Blood Drive. So, and that blood drive actually took place on 27th of August, just after the Ashura. This blood drive was throughout the world. It's an international event organized by Hussain, who's a British-based organization. And the idea was to donate blood in the name of Imam Hussain alayhi salam on a single day, and the highest number of blood donation on day. And mashallah, they have able to achieve that target. So if you see on, they just announced today on the day of Arba'een, 37,108 blood donations were made throughout the world, which is a world record on a single day of the highest donation anywhere in the world. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is what the this is what the love of Sayyid al-Shuhada does, right? Wonders. Thanks to all of the donors who have donated. May Allah subhanahu wa ta'ala and Bibi Sayyida
accept your donation and your efforts. Anyone who has contributed in this center, here, any other Jamaat of our, or anywhere in the world in this cause, to promote this cause or serve anyhow in this cause, may you get the reward from Bibi Zara Salaam alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Just like to share this event because this is what we promised, that we'll give you update as soon as we have, and they just announced today on the day of Arba'een. Inshallah, we'll start the majlis, and after majlis, do stay with us for the Ziyat Arba'een and for the Niyaz. And I'll request you for your with your loud salawat for Sheikh to start his lecture, or the Muharram majlis or the Arba'een majlis. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allah. Please recite Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام أشرف المرسلين وخاتم النبيين أحمد مجتبى أبي قاسمي محمد مصطفى. الله وعلى الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله واسعة ويا بابا نجاة الأمة فليتنا كنا معكم سادتي فنفوذ فوضا عظيم. إنا لله وإنا عليه راجعون. When Jabra went to Carabella, we wonder if he was near Carabella at the time or have he traveled. But it was something special because it was actually 40 days after the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam on the 20th of Safar. So when we ask, is this something that is common? Is it something about this 40 days? Islam always says something about 40 days or rewire about 40 days. We find that it is important to visit our deceased after they have gone for 40 days. Because once they go inside the ground, we tend to forget about them as time go on. And by every 40th day or after 40 days after their death, we begin to mourn for them once again, and we begin to pray for them.
pray for their souls. So when we look at from that perspective, we see that it's important for us to continue the remembrance of our deceased after their death. And we should never forget them. But when it comes down to this 40, what does Allah talk about 40 days? What is the importance of 40? One of the things that we could see is that when Prophet Musa alayhi salam, when Allah has sent him up to get revelation, he stayed up there for 30, and then Allah added 10 more days, and the count altogether was 40 days. There was a 40-day span in which he was away from Bani Israel. Then we start to think, okay, this may be some type of significance in this number 40. Then we realize that Prophet Nuh alayhi salam, he traveled around the earth on the ship for 40 days and 40 nights. And we start to say ourselves, there is definitely something into this 40. Then we start to look at how when a man is considered to be mature, that he is at the age of 40 from an Islamic perspective. Then we look at some more history that when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when he received wahi, he was exactly 40 years old. So we start to say that there is some type of significance in this number 40, that there is an importance in this number, that this is a godly number. It's not just any number now. Then we start to look at other things like how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that the earth mourns the righteous person for 40 days. Or the earth laments the righteous person for 40 days. For 40 days. Then we start to look at what had happened for Karbala. And the incident of Karbala and how everything mourned. We found in another why that said that the earth mourned Imam Hussein alayhi salam for 40 days. So we are building that there is so much evidence that 40 means something. It's just not any random number at all. No, it is an important number. We also look at that when a person wants to start a habit, they said it takes about 6 weeks, which is about 40 to 42 days. We cannot have a habit unless we do it with that many times, and then it becomes a part of us. 40. So we are surrounded by this number, even though we do not realize it. So when we come and we mourn for Imam Hussein alayhi salam on the 40th day after his death, we know that we are doing something that is important. It is not something that is frivolous. As we said that the earth mourned him for 40 days. But not only did the earth mourn him for 40 days, they said that the eclipse happened for 40 days. It rained down blood from the sky for 40 days. The cloud of darkness was redness, with the redness word for 40 days. So all these things happened with 40 days. This is the reason why we celebrate for 40 days. It is not something that all of a sudden, yes, we just do. So when we look at Jabra and we see that he is there after the 40 days of the death or the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, we realize that yes, there is a significance in this. It's not frivolous, but something in which we ourselves must do. So when it comes down to the mourning of Imam Hussein, we mourn him 40 days after the death or the martyrdom, because
so we can remember the incident that happened in Karbala, so we may never forget. Because when a person does not mourn somebody after 40 days of their death, they tend to forget about that person who is no longer with us. So we relive that moment of their life that took their life away from us, and now we start to say, no, we cannot forget this event. This is why we constantly mourn 40 days. If we did not mourn these 40 days, we will tend to forget all about the person. Right? This is what will happen. This is exactly what happened. But how can we forget about Imam Hussein? We can't. Because when we look at certain incidents that happened on the plains of Karbala, that happened 40 days to this day, but many years ago, we remember when Imam Hussein alayhi salam, he told Ali Akbar, because he looked just like Rasulullah, that for him to call the Adhan. And then when he would call the Adhan, he hoped that these people will remember the time in which Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was there. We see it almost like when he was saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. We should know that at that moment, since Ali Akbar looked just like Rasulullah in looks, in personality, and etiquette and all that, they should have remembered that they're fighting against the family of Rasulullah. But of course, they didn't care. So when we look at one of the significant reasons why we must mourn and why we cannot forget about this event is that events like this, when he tried to give them the reminder of who we are. We are the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah said that he only wants you to be kind to his family. He asks of no other rewards, just kindness to his family. In the bitter end, Imam Hussein, he tried to show them that, look, you are not in the right. You are wrong. This is something in which is not correct. You are not remembering the legacy of our father, our grandfather, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then we start to look at before Imam Hussein alayhi salam, he went out and he fought. He was requesting some clothes from his family. Because unlike us, when we know that we're going to pass away, we don't think about the clothing in which we are going to wear, or how will our state be once we are dead. But here it is, Imam Hussein, he worried about his state or how he was going to be after his death. And he requests certain type of dress that was not fancy. Some of it was even torn to put on his body to make sure that he will have some clothes on him, that he would not be in a state of nakedness in the plains of Karbala. But yet, when they had slaughtered the Imam, the first thing in which they did, they started to remove his clothing. They start to take his kamish. They take his pants. They take his cloak. They take all the clothes off the body of the Imam. We know from a perspective that how can you take the clothing of something that cannot help himself? How can you take the clothing, let alone from the Imam? It is though that they wanted to have the Imam humiliated in there and naked on the plains of Karbala. And we see that even the ring that was on his finger, they said that it was not able to remove it because of the blood, and they cut the head. And we see that these people, they took the imama off the head of him. They took all that he had on him away from him.
They looted the Imam at the stake where he was right there laying in the plains of Carabella. But that is not all that they did. Then they went and asked who would be the one who would want to trample over the Imam. So they start to find people to go with their horses and trample over the Imam's body. We cannot forget this. How can we forget this? This is an event that changed how we think and how we act and how we see things. But this is not all they did. After they trampled over Imam Hussein alayhi salam, they decided to go and start looting everything. They start ripping the clothing off the women. We know that amongst our women, the most important thing to them and the most important thing to us for them is that they have their modesty. They start to rip the clothing off of them. They see braces on somebody, they will take it from them even though they was crying. They will loot everything that they saw in sight. Not only will they do that, they will also burn the tents, take the hijabs, have the women out there without hijabs, so much so that they have to cover their head with their hand. All of this was going on while Imam Hussein alayhi salam was laying there with his head severed off his body, trampled on over, clothes taken from his body. No one there who help him can help him. This is one of the things in which we cannot forget. We can never forget this. Remember, the Imam, he did not come there to fight them, because if he came there to fight them, the Imam had a standing army. He came to go and help the people. But this problem didn't just happen. These people did not just hate Imam Hussein that day. They hated him before he was even born. These people hated him before he was even born. They said that in the past when Hashim and Umayyad, the uncle and nephew, they was made a bet. They said if a sage come, whoever prefer us better than other, we have to go to Syria. So when the sage come, he preferred Hashim over Umayyad, so Umayyad had to go to Syria. This is why the people in Syria were so inclined to the people of Umayyad that whatever they said and do, they would follow them out of ignorance because they thought these people was the right ones. This is why he could tell them, oh, let's do Friday prayer on a Thursday. Let's do Friday prayer on a Wednesday. Let's do Friday prayer on a Monday. These are the people which we are dealing with that took the life of Imam Hussein and those who was there with him. How can we not forget? How can we forget? How can we just pass this or sweep this under the rug? We cannot sweep this under the rug. We have to mourn our Imam. We have to instill this love for our Imam in the hearts of our children. The hatred of those who had taken advantage of the Imam and not allowing him to have not even a drink of water, to reject him water. We see that in Riwayat it said that when Imam Ali, his father, was at war, and none of the people were able to get water. So Imam Hussein, he said, let me go and fight to get the water. So some of the people, they went with Imam Hussein and he was able to get the water. And they said, when he came back and said, Father, I got the water. Then all of a sudden, Imam Ali started to cry. They said, why are you crying? He said, these people are going to deny my son water. They're going to take his life and deny him water. This is the things in which they've done to the Imam.
They cut the head off. They sever the head of the imam. They put it on spear. They prance it around. They put it on a plate. They make it seem like it's some type of dish with a cover over it to show to his daughter. They put Arba'een in a dungeon. All of this for what? All this for what? This is the reason why we remember Imam Hussein 40 days after his martyrdom. Because this incident was so traumatic that there's no way we cannot, anybody who has a heart can forget this type of event. Only those who are hard-hearted cannot have remorse for people that lose their life, that are innocent, that did not come to fight, but yet they was outnumbered. Now, we have to think that when all of this is happening, that now the person who was always with Imam Hussein, Zainab, is now alone without the Imam. She's going through the actions of tents being burnt. We should know that this is not the first time in which Zainab had to go through a burning incident, because she was in the household where they set the door on fire previously. Now she has to go through this one more time. Now she has to be the one strong to try to keep everybody intact. We have to look at this situation. Look at this. Zainab is not known to be those that in history have so much spoke about. But at that time, she stepped up. So much so, they said that when Yazid, Allah, his wife, came down and she went to go see Zainab or to see what was going on with people, she said to them, she said, so where is Hussein? Where is Hussein? Because I know that Zainab never go nowhere without Hussein. And then when they said that Hussein was the one martyr and cut head, they said she rushed towards Yazid to ask her, why did he do this? Why did he do this? And like the coward he is, he blamed it on someone else. He blamed it on someone else. This is why we celebrate, or no, not celebrate, but we remember, we mourn, we cry for 40 days, just like how the earth cried, just how the sun and the moon eclipsed, how the rain of the blood from the skies for 40 days, all the events that happened because of this event, this is why we do what we do. Just like how the jinns, they mourn for Imam Hussein. Those who follow Imam Hussein, we mourn for Imam Hussein. We will never forget what happened for Imam Hussein. How can we? How can we? Especially how these people did certain things, like, for instance, we all have children, or we all had children. Remember how when he lost Ali Asghar, we look at this incident where Imam Hussein, he finally brought Ali Asghar back to his mother, and they buried the body of the baby in the ground. When they killed everybody, the most horrendous thing they did, the heinous thing is which they did was they took account of all the dead people. They said, we are missing someone. Where's the baby? And when they was poking in the ground, they found that the ground was soft, and what they did, they dug the baby up and took him out of the grave. Took the baby out the grave. This is why we cannot forget this event. We cannot forget this event. This event, oh my God.
When we look at all those who lost their lives during this time, innocent people, people who will never grow up because of the hatred they have for the household of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just because of the hatred. Inna lillahi wa inna alayhi raji'un. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين. يا حسين يا حسين يا حسين. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फुपी चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फुपी चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, मदीना, ए फुपी चलिए मदीना। बन गई कब्रें नजर दिला दी, अश्कों की चादर सबको उड़ा दी। घर चलो अब तो जी खोल के रोना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना। हो गया चेहलुम कर चुकी मातम, जिंदगी भर है अब तो मुहर्रम, ताबा क़यामत अब है तड़पना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना। ए फूफी अम्मा होगी कयामत, पूछे जो बाबा हमसे बरकत, क्यों नहीं आई बाली सकीना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, रोएंगी कब तक नहर किनारे, अब न मिलेंगे अम्मू हमारे, हमको अलम है उनका उठाना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, फूफी चलिए मदीना। कब्र नबी पर पहले चलेंगे, गिरिया करेंगे नोहा पढ़ेंगे, गुजरी जो हम पर नाना से कहना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना,
चलिए मदीना ए फूफी चलिए मदीना, चलिए मदीना। सुगरा का शिकवा चल के मिटा दो, गश में है सुगरा उसको जगा दो। मर गए अकबर ये न बताना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना। मदीना चलिए मदीना, चलिए मदीना ए फूफी चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना। कैद में गुजरा सारा मुहर्रम, मजलिसो मातम कर न सके हम। घर में अज़ा का फर्श बिछाना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना। चलिए मदीना ए फूफी चलिए मदीना, मदीना चलिए मदीना, चलिए मदीना ए फूफी चलिए मदीना। कहते थे आबिद सरवर और रेहान, आप पे सदके मैं हूँ फूफी जान। हुक्म इमामत अब है निभाना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना। मदीना चलिए मदीना, चलिए मदीना ए फूफी चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना ए फूफी चलिए मदीना। या हुसैन, या हुसैन। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। तरसे पानी को जो सर के लुटाने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। हो गई शाम उन्हें शाम के बाजारों में, हो गई शाम उन्हें शाम के बाजारों में। एक बीमार खुला खो है सताने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। हो गई शाम उन्हें शाम के बाजारों में, हो गई शाम उन्हें शाम के बाजारों में। एक बीमार को लाखों है सताने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। पानी तक तूने न मांगा मेरे मजलूम हुसैन, पानी तक तूने न मांगा मेरे मजलूम हुसैन। तेगो खंजर से प्यास अपनी बुझाने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले,
लुट गए आले मोहम्मद के घराने। बोली ज़ैनब जो गिरी खाक पे तस्वीरे रसूल, बोली ज़ैनब जो गिरी खाक पे तस्वीरे रसूल, चल बसे याद बिना ना की दिलाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के। रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ, रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ, लौट कर आए नहीं पानी पिलाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। बोली फिजा ना इन्हें मारो जरा शर्म करो, बोली फिजा ना इन्हें मारो जरा शर्म करो, ये तो नबियों की भी है शान बढ़ाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। पानी तक तूने न मांगा मेरे मजलूम हुसैन, पानी तक तूने न मांगा मेरे मजलूम हुसैन, तेगो खंजर से प्यास अपनी बुझाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। ज़हरा कहती बख्शवा दूंगी उन्हें महशर में, ज़हरा कहती बख्शवा दूंगी उन्हें महशर में, जो मेरे लाल पे आंसू है बहाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। पीर बेशीर को कहते हुए रोया कौसर, पीर बेशीर को कहते हुए रोया कौसर, क्यों हुए ज़िब्हा ज़ुबां खुश्क फिराने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। तरसे पानी को जो कौसर के लुटाने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने।
मनता मन मन हारी अकबर तू ना आयो, मनता मन मन हारी आयो, मनता मन मन हारी अकबर मैं सदके मैं बारी अकबर तो ना आयो, मनता मन मन हारी अकबर तू ना आयो। नाने दे रोजे ते जाके रात दिने, नाने दे रोजे ते जाके रात दिने, हाय सौ सौ अर्ज गुजारी अकबर तो ना आए, सौ सौ अर्ज गुजारी अकबर तो ना आया, मनता मन मन हारी अकबर दर्द कलेजे होया विच मदीने दे, दर्द कलेजे होया विच मदीने दे, हाय जालिम बरछी मारी अकबर तो ना आया, मलिम बरछी मारी अकबर तो ना आया, यू मनता मन हारी अकबर तो ना आया, मनता मन मन हारी अकबर तू ना आया। की जीना बैना दा बाज बरावा दे, की जीना बैना दा बाज बरावा दे, हाय रुल गई बहन प्यारी अकबर तो ना आया, यूं रुल गई बहन प्यारी अकबर तू ना आया, यूं मनता मन मन हारी अकबर तू ना आया। ख्वाबां विच मैं वेखा जाली झूले दी, ख्वाबां विच मैं वेखा जाली झूले दी, झूला रह गया खाली असगर तो ना आयो, झूला रह गया खाली असगर तो ना आए, मनता मन मन हारी अकबर तू ना आयो, मनता मन मन हारी अकबर तू ना आयो। वीर खडावड़ पईया वीरा वालड़िया, वीर खडावड़ पईया वीरा वालड़िया, हाय मेरी झोली खाली असगर तो ना आया, यूं मेरी झोली खाली असगर तो ना आया, यूं मनता मन मन हारी अकबर तू ना आयो, मैं सदके मैं बारी अकबर तो ना आया, या हुसैन। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, ए दरो बतूल के नूर ऐन अलविदा, अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, माह गम गुजर गया गम तेरा न कर सके, मजलिसे हुसैन तेरा हक अदा न कर सके, एक एक अश्क गम का है ये बैन अलविदा, अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, दिल लहू लहू किया अश्क से वजू किया, तज़किरा हुसैन का यूं तो चार सू किया, उठ रहा है अब मगर दिल का चैन अलविदा, अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, मजलिसों की रौनकें अब कहाँ मिले हमें,
इस जुबां से अलविदा अहले गम कहें तुम्हें, ए शऊर गम के शाह मशरिकैन अलविदा। अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। तश्न लब शहे हुदा ए शहीद करबला, आँख तर न हो सकी माह गम गुजर गया, चश्मे गम से क्यों न बरसे खूं का ऐन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। मातमी लिबास में मर्दो जन थे नोहागर, तेरे गम में शाद थे अपने गम से बेखबर, खत्म गम की होती है ज़ेबो ज़ैन अलविदा। अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। माह गम गुजर गया गम तेरा न कर सके, मजलिसे हुसैन तेरा हक अदा न कर सके, एक एक गम एक एक अश्क गम का है ये बैन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। दिल लहू लहू किया अश्क से वजू किया, तस्करा हुसैन का यूं तो चार सू किया, उठ रहा है अब मगर दिल का चैन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। बस रेहान नोहागर हो गया लहू जिगर, साल भर के वास्ते दे प्याम मुख्तसर, फातिमा के जानो तन ए हुसैन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। तश्न लब शहे हुदा ए शहीद करबला, आँख तर न हो सकी माह गम गुजर गया, चश्मे गम से क्यों न बरसे खूं का ऐन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा, 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 अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। या हुसैन 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 या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। We'll do Ziyarat Arba'een. Assalamu alaikum. At first, I want, before Ziyarat al-Arba'een, read the Dua al-Faraj for Imam Zaman, Salawatullah alayhi. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل. زيارة الأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد،
السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة وقاعدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فعذر في الدعاء ومنح النصر، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى، وشرى آخرته بالثمن الأوكس، وتغطرس وتردى في هواه، وأسخطك وأسخطت نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا، ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدتك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فريضت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البربر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع،
ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين يا رب العالمين. صلوات. Assalamu alaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah ba'asallah. Assalamu alaikum sahbi safina rahmatullahi alamin wa khatimin nabina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Ali Amir al-Mu'minin wa Qa'id al-Ghur al-Muhajjalin wa Imam al-Muttaqin. Assalamu alaikum ya Fatima al-Zahra Sayyidat al-Sa'il alamin. Assalamu alaikum ya Khadija al-Kubra Umm al-Mu'minin. Assalamu alaikum Hasan al-Mujtaba. Assalamu alaikum Hussein Shahid Karbala. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أئمة الهدى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم ووليد موسى الرضا ومحمد بن علي تقي الجواد وليد بن محمد هادي النقي وحسن بن علي زكي العسكري. السلام عليكم مولانا صاحب العصر والزمان. alaman 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 min fitnati zamani wa shaitan. Assalamu alayka Khalifata Rahman ya imamuna wa imam al-insi wal jan. Ajjallah ta'ala farajak wa sahla ta'ala makhrajak wa zahurak wa jalna min ansarik wa awanik wa mustashadina bayna yadayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. There's a request for a Surah Fatiha for all the marhumin, Shohada Karbala, the sponsor of tonight of this Niyaz has requested Haditha Fatiha for marhumin of Dodia and Fazal Bhai family. All are marhumin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The Niyaz will be served in a few minutes. If I can request everyone to just give them a space at the back so they can set up the Niyaz. It will take a few minutes. For Muhammad wa ali Muhammad salawat.